Hi guys, welcome to EduTap. So since we all know now that NPS Grade B notification for 2022 can come out anytime, in this video I'm going to share with you all the information related to NPS Grade B, salary, then your syllabus, pattern, cutoffs, eligibility सब डिस्कस करने वाले हैं as per 2020 notification. 2020 में लास्ट नोटिफिकेशन आई थी, उसमें जो भी डिटेल्स थे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. I think the details are going to be the same in the year 2022 notification, but these details are based upon 2020 notification. तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2020 में क्या आया था, क्या पैटर्न था, क्या सिलेबस था, क्या एलिजिबिलिटी थी, all that I am going to tell you in this video. And before I start, I would request you to subscribe to our YouTube channel and do join our Telegram channel also, where we keep sharing free content. The link to join this Telegram channel is given in the description of this video. Now ये नोटिफिकेशन लास्ट 2020 में आया था दिसंबर में, एंड द एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म डेट्स वर फ्रॉम 30 दिसंबर टिल 29 जनवरी 2021. ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले ये नोटिफिकेशन आया था. एट दैट टाइम जो भी डिटेल्स थे वही मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. दैट टाइम द नोटिफिकेशन केम फॉर NPS Grade B and Grade A, but in this video we are going to limit ourselves to NPS Grade B, and under Grade B the vacancies came under two streams, journal stream and the information technology stream, but हम सिर्फ journal stream के अंदर ही डिस्कस करेंगे, information technology stream को नहीं डिस्कस करेंगे. So we are going to limit ourselves to NPS Grade B and that too journal stream. काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, मैं शुरू में ही एड्रेस कर देता हूँ. सर लास्ट ईयर NPS Grade B जर्नल स्ट्रीम में सीट्स वर अराउंड आई थिंक समवेयर अराउंड 4 to 6 और इवन लेसर देन दैट, मे बी 3 to 4. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बहुत कम थी. तब भी लोगों ने पूछा सर ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. माई आंसर रिमेन्स द सेम. देखिए, अगर तो आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं देन यू शुड गिव दिस एग्ज़ाम. सीट चाहे 3 है 4 है, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर सेबी to a good extent, then I think you are in the top 100 who would be competing for this exam. Otherwise, if you are thinking to prepare for SEBI for next year, or you have already started preparing for SEBI next year, then also you should give this exam, because the syllabus is entirely same, almost same, just I think 5-6% difference. तो एक NPS का एग्जाम देंगे, डेट्स होंगी, एक अच्छे मोमेंटम के साथ पढ़ा जाएगा. अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप योर मोटिवेशन ऑन फॉर द एंटायर ईयर. ठीक है, तो फॉर्म तो फिल ज़रूर कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, चाहे कम पढ़ के दीजिए, ज़्यादा पढ़ के दीजिए, बट एग्ज़ाम यू शुड डेफिनेटली गिव. और आपको थोड़ी मोटिवेशन दे देता हूँ एग्ज़ाम के लिए. सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियरली मेंशन इन द 2020 नोटिफिकेशन ऑफ NPS दैट ग्रेड बी पैकेज इंक्लूडिंग ऑल द पे and the benefits is around 21 lakh per annum. So this is huge to start with. I think if you're 24, 25, 26 years of age and you are getting 21 lakh per annum as a starting package, along with lot of learning and growth opportunities in an organization which is bound to grow by leaps and bounds, I'm sure about that. I think it's a very good opportunity. बाकी सिर्फ पैसे के लिए मत जाइए. I think पैसा शायद अगर आप अच्छे एजुकेटेड हैं कहीं और ज़्यादा मिल सकता है, बट वर्क लाइफ बैलेंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू विल गेट हियर आर अनमैच्ड. सो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट सेम एज नो व्हाट इज देयर इन सेबी. यू शुड हैव मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन, मैथ्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फूड एंड सप्लाई, आर्ट, साइंस, होटल मैनेजमेंट, फार्मा. किसी भी फील्ड में अगर मास्टर्स है यू आर एलिजिबल. बट बैचलर्स में यू शुड हैव बैचलर्स ओनली इन लॉ एंड इंजीनियरिंग, देन ओनली यू आर एलिजिबल. सीम्स वियर्ड बट दैट इज ट्रुथ. बैचलर सिर्फ लॉ और इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट CA, CFA, CA, CS and CWA are eligible. Right? That is for journal stream, and we are not going to discuss anything about the information technology stream. Now in the qualification they have also added desirable experience, which is like you would be given preference. Uska kuch weightage hai desirable experience ka, that I would be telling you later. So they are saying minimum 3 years of experience in these sectors: pension, financial, law, investigation, finance, economics, accountancy. This would be counted as an experience where you would be given some extra marks as compared to others. तो ये मैंडेटरी नहीं है बट डिज़ायरेबल है. इसका वेटेज भी इन्होंने 10% रखा है ओवरऑल सिलेक्शन में. लेटर मैं आपको सारा क्राइटेरिया भी बताऊंगा. ठीक है,
तो अगर आपके पास है अच्छा है, नहीं भी है आई थिंक स्टिल यू कैन कम्पीट, 10% आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. बट एनीवेज, तो ये दो चीज़ें हैं. और एज लिमिट एज पर 2020 नोटिफिकेशन द कट ऑफ डेट वाज 30th November. So अगर now notification will come in August, the cut off date might be July. So by 31st of July you should not have crossed 30. Right. So this is basically for journal category और unreserved category. बाकी relaxation रहता है एज में for SC ST 5 years, OBC 3 years, and for PWBD it's 10 years, and then you can do cumulative. If you are OBC and PWBD it would be 13 years, and if you are PWBD plus SC ST it would be 15 years. ठीक है जी. तो आई होप दिस एलिजिबिलिटी इज क्लियर. डिजायरेबल एक्सपीरियंस रिपीट कर देता हूँ. दिस इज नॉट मैंडेटरी बट दिस इज डिजायरेबल फॉर विच यू विल गेट सम मार्क्स. सो द वेटेज ऑफ दिस इन द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज अराउंड 10%. तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप डिजायरेबल एक्सपीरियंस में नहीं आते हैं, आपको ये 10% वेटेज में 0 मार्क्स मिलने वाला है. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक यू शुड स्टिल कम्पीट इवन इफ यू आर नॉट हैविंग डिजायरेबल एक्सपीरियंस, बिकॉज अगर आप अपना फेज 2 अच्छे से देंगे तो स्टिल आई मीन यू स्टैंड अ चांस. बाकी पैटर्न एनपीएस ग्रेड बी का बात करें, सो देयर आर 3 phases. Phase 1 is screening, qualifying. Phase 2 will have 2 papers, 100 marks each, and then there would be Phase 3 interview. If I talk about Phase 1, then it's like any banking exam where you would be given questions from different sections like quant, English, computer, reasoning, and financial awareness. ठीक है. सो टोटल 200 क्वेश्चंस, 190 क्वेश्चंस होंगे एक्चुअली. आई विल शो यू ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन. 190 क्वेश्चंस वर्थ 200 मार्क्स एंड टोटल टाइम इज 2.5 hours, 150 minutes. Again, this is as per 2020. If there is any change, we will get to know in the 2022 notification. So this is the exact pattern. 190 questions, 200 marks, and 150 minutes. The breakup of these questions in different sections is English language 40, reasoning 40, financial awareness 40, computer awareness 40, quantitative aptitude 30. Every question is a 1 mark except in reasoning, जहाँ पे 40 questions को 50 mark का weightage दिया गया है. Right? So again, this is something weird. I am not able to understand why reasoning has been given this additional weightage, whereas English, general awareness, computer, and quantitative aptitude, each question is of 1 mark. Maybe if you know the reason, you can let me know in the comment section. So there would be negative marking. There would also be sectional cutoff and overall cutoff. That is not pre-decided. That would be decided based upon the performance of various students. So that would be dynamic. पेपर के बाद ही पता चलेगी सेक्शनल कट ऑफ क्या है और ओवरऑल कट ऑफ क्या है. सो दिस इज फेज 1 पैटर्न. ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, 190 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स का है और 150 मिनट्स का है. Now coming out of phase 2, which is having 2 papers worth 100 marks each. So there would be 2 papers in phase 2. Paper 1, well, this is for all streams anyways. I'm talking about journal stream, which is descriptive test of English, 100 marks and 60 minutes. Here for 100 marks, you will get 3 questions, essay, précis and comprehension. You will have to do them in 60 minutes. So here time management will become very important. Then for paper 2, you will have multiple choice questions from 6 subjects: commerce and accounts, management, finance, costing, company act, economics and pension. Actually 7 subjects. All these 7 subjects combined will have 50 questions for which you will be given 40 minutes and they would be worth 100 marks. ठीक है. तो यहाँ पे भी time management becomes very very important because you are just being given 40 minutes for 50 questions and each question is of 2 marks. That is total marks would be 100. Negative marking paper 2 में 1/4 होगी. Paper 1 is descriptive, so there would not be any negative marking. And paper 1 which would be descriptive, again it would be online. You would have to type using the keyboard. And there would be cutoff for each paper. Again, this cutoff is not pre-decided, as in SEBI you are required to get 40% minimum. But here the cutoff for each paper would be decided based upon the performance of different students, and there would be overall cutoff for the clearance of phase 2, जो कि इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे. ठीक है जी. आई होप phase 2 is also clear. I'll discuss the syllabus for this paper 2 later. For English, I've already told you there would be 3 questions: essay, précis and comprehension, worth 100 marks, and you will be given 60 minutes.
So there would be an interview also, and the overall weightage that I was talking to you earlier is basically uh, phase 2 एग्जामिनेशन विल हैव वेटेज ऑफ 70%. तो आपके 200 में से जितने भी मार्क्स आएंगे दे विल डी स्केल इट ऑन आउट ऑफ 70. ठीक है, तो आपके 200 में से सपोज एक्स मार्क्स आए हैं, दे विल काउंट इट कि 70 में से कितने बनेंगे. बाकी डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस से 10% वेटेज है. ठीक है, आपका 3 इयर्स एक्सपीरियंस है, 4 साल एक्सपीरियंस है, 5 साल एक्सपीरियंस है, बेस्ड अपॉन दैट ये 10 में से आपको नंबर दिए जाएंगे. देन इन इंटरव्यू द वेटेज इज 20%. राइट, सो ये ओवरऑल ब्रेकअप है. फेज 2 70, इंटरव्यू 20 एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस 10. Now syllabus for phase 1, we know these sections are there. The syllabus is not defined in the notification for phase 1, but this is like any other banking exams, what you have been studying in SEBI, or if you have been preparing for NABARD, RBI, the syllabus is same, but the point is कि लेवल बहुत इजी आता है यहाँ पे, उतना मुश्किल नहीं आता है जितना आरबीआई में आता है. सो देर इज़ नो नीड टू डू वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस. आई थिंक इजी और मॉडरेट लेवल प्रैक्टिस करके जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. अंडर फाइनेंशियल सेक्टर अवेयरनेस दे कैन आस्क यू सम स्टैटिक कंसेप्ट्स ऑन से बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, capital markets, IPOs, etc., etc., and they can also ask you some current affairs related to SEBI regulations or RBI regulations. Now syllabus for phase 2, there are around 7 subjects, right? I'll first talk about commerce and accountancy. So commerce and accountancy, again, this is the syllabus in front of your screen. Accounting as financial information system. Here basically you have to study about different computer softwares like Tally and all, which are used for accounting. Then accounting standards is very, very important, right? Accounting for depreciation, which is basically now under accounting for I think property, plant and equipment, right, PP. Then inventories, revenue recognition, foreign exchange transactions, investments, all these are very, very important. I can't recommend you to leave anything. Cash flow statements, fund flow statement, financial statement analysis, ratio analysis, accounting for share capital transactions, very, very important. This is the basic chapter that you anyways need to read before you can jump onto accounting for bonus shares and right shares. Then employee stock options and buyback of securities. If you want, you can leave this. Again, it's risky, but if you find that it's too much of a syllabus for you, I think this point number E you can leave, or you can deprioritize it for later. And then preparation and presentation of final company accounts, very, very important. A lot of questions are asked from this chapter. Management, basically the management processes like planning, organizing, staffing, directing, controlling, leadership, HRD, motivation and communication. These are the main units. Again, in management, the questions are not easy. They are not bookish. They are concept based. So I would recommend you to read all these chapters anyways, because management can be very scoring, and practice a lot of MCQs, case study based questions, and do not just limit yourself to bookish knowledge. For financial system, again, you can see roles and functions of regulatory bodies in the financial sector. That basically, what are the regulatory bodies, what do they regulate, what are their responsibilities. So ये आपको पढ़ना रहेगा. Primary and secondary markets, very, very important. Different debt instruments like cash management bills, T bills, then your repo, reverse repo, all this is very, very important. And commercial bills. There are a lot of questions on regulations related to these instruments. Derivatives is important. Financial inclusion using technology, not much important, but very basic question can be asked. This is basically related to current affairs. Then again, GST, Finance Commission, Fiscal Policy, FRBM, some basic question can be asked in the exam, and of course inflation. This part is not that important. Point number D. इसमें से ज़्यादा questions नहीं आने की संभावना है. Coming on to the costing, so costing में the most important part is basically this methods of costing. ये सारे methods of costing आपको पढ़ने हैं, specifically process ऑपरेशन कॉस्टिंग. दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. देन देर इज न्यूमेरिकल पार्ट. कॉस्टिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे. मेजॉरिटी ऑफ द न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड फ्रॉम 4 चैप्टर्स. वन इज प्रोसेस ऑपरेशंस कॉस्टिंग, देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल. ठीक है, तो कॉस्टिंग को इस हिसाब से पढ़ना है. देन द 4th यूनिट, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन. यू शुड नॉट लीव दिस एट एनी कॉस्ट. दिस इज प्योर थ्योरेटिकल. अगर आप पहले 3 यूनिट्स देखेंगे ये वाले, हेयर देयर वुड बी लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, और एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. But 4th chapter, lean system and innovation, is basically plain theory. Even if you do not understand the first 3 units, you can still do this unit as a standalone.
तो इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं 5S, केजन, JIT, लीन सिस्टम, TPM, सिक्स सिग्मा, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, BPR, ये सारे बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर कॉस्टिंग पूरा भी छोड़ने का मन हो तब भी लीन सिस्टम एंड इनोवेशन ज़रूर करिएगा। Companies Act, again, do not read the entire Companies Act. There are specific chapters given clearly in your syllabus, chapter 3, 4, 7, 10. I think this is related to auditors. 11 is related to board of directors. This is related to NCLT, right? Chapter number 27. So ये सारे chapters पढ़ने हैं. I do not remember their actual names right now. But again, in companies law, there is nothing I can tell you कि ये छोड़ दो, ये कर लो. But one thing is clear, they are asking you lot of factual questions. Section numbers भी पूछते हैं. They might ask you section numbers, but there is no need to remember the entire set of section numbers. Remember the section numbers only where some power is being given, where some hierarchy is being defined. Hierarchy मतलब कि A को B अप्रूव करेगा, B को C अप्रूव करेगा, ऐसे करके कोई हायरार्की है या कोई पावर अथॉरिटी है, कहीं भी ऐसा कुछ है, उन सेक्शन नंबर्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। Now coming on to the economics, economics is basically divided into two parts. The upper part is basically micro. ये A part आपका mostly micro है, नीचे वाला macro है. Macroeconomics is little bit easy to understand, and if you're prepared for RBI or NABARD, you would have already read this. But micro part, especially classical and Keynesian approach, consumption function, investment function, multiplier and accelerator, demand and supply of money, ISLM, ये चैप्टर्स हैं, ये काफ़ी टफ हैं, ग्राफ बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं. सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव दिस चैप्टर्स, बट व्हेन यू विल बी रीडिंग दिस चैप्टर्स, मैनी अ टाइम्स यू माइट फील कि यार नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, बट डू नॉट गिव अप, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम बाय रीडिंग देम अगेन एंड अगेन. ठीक है, करना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बट पैनिक मत कीजिएगा. सो दैट वॉज अबाउट इकोनॉमिक्स. अभी एक पेंशन रह गया है, यहाँ पे मैंने पेंशन नहीं इंक्लूड किया है. पेंशन में बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दे विल आस्क यू फ्रॉम NPS, पेंशन स्कीम्स, अटल पेंशन योजना APY, इनके बारे में सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए. NPS क्या है, APY क्या है, उसका सारा फ्रेमवर्क आपको समझ आना चाहिए. ठीक है, और पेंशन स्कीम्स जो इंडिया में हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल मेजॉरिटी यू नीड टू रीड इन पेंशन, बाकी पढ़ना तो सारा ही है. और अगर कट ऑफ्स की बात करें गाइज, the point which I'm not able to understand right now is that nowhere on the website the final cutoffs for NPS are given. That after the interview, what are the final cutoffs? Nowhere they are given. If you find a link for that, if you know that, do let us know by emailing us at our email ID or giving us the link where final cutoffs are given. But in the meantime, phase 2 की cutoffs available हैं. phase 2 में अनरिजर्व कैटेगरी में 50 थी, ठीक है, इंग्लिश में, और दूसरे पेपर में भी 50 थी. सो टोटल इज़ 50 in paper 1, 15 paper 2, but the total is 135. So that was for phase 2 cutoff. That is people who scored more than 135 out of 200 in phase 2 would have appeared for the interview. But what was the final cutoff after the interview? That is nowhere given on the website. So I'm not sure how it was released. If you guys know, please let me know by commenting below the वीडियो, और हमें या तो ईमेल करके बता दीजिए या कोई लिंक शेयर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में. सो दैट्स इट गाइज. आई थिंक आई हैव गिवन यू द एंटायर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सिलेबस, पैटर्न, थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी भी मैंने बता दिया है, कट ऑफ्स भी बता दी हैं जो पता थी, एलिजिबिलिटी भी आई हैव शेयर्ड विद यू, पे स्केल भी आई हैव शेयर्ड विद यू. सो आई थिंक नाउ आपको अगर NPS अच्छा लग रहा है और आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, यू हैव रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद यू टू स्टार्ट, कि कहाँ से शुरू करना है, कितना SEBI के साथ ओवरलैप है, क्या अलग से करना है. यू वुड हैव दैट एंटायर स्ट्रैटेजी विद यू राइट नाउ. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. और अगर अभी भी डाउटफुल हैं तो अगेन यू हैव टू टेक द डिसीजन, बट मैं यही कहूँगा कि वंस वी हैव एग्ज़ाम ऑन आवर हैंड्स, और अगर हमें SEBI देना है तो NPS ज़रूर देना चाहिए. बिकॉज NPS ग्रेड बी का जब एक टारगेट दिखेगा कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है, सितंबर में एग्ज़ाम है, then in those 50-60 days I would be at my best, I would be very productive, I would be able to revise very quickly. तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देना चाहिए. ठीक है,
It's not about selection. I think it's about the preparation which can get on the right track if you appear for this exam. So I take your leave now. If you have any queries, do let us know by emailing us at hello@edutap.co.in. Bye bye. Have a nice day.